Okay, so this is phenol. I told you in the last class that phenol has acidic nature. Okay, or basically when OH group is attached on the benzene ring, okay, so that would be known as phenol. बहुत weak acid होता है, okay, and it partially ionizes only, or the Ka for phenol is 1.3 exponent minus 10, which shows that this is a very weak acid. Okay. ओके आगे चलो. Yes. अच्छा, फिर ये जो के ए की वैल्यूज हैं बेसिकली हमें ये बता रही होती हैं कि हाउ मच द एसिड इज वीकर और यू कैन से स्ट्रॉन्गर. सो के ए इज वेरी स्मॉल विच शोज के phenol is very weak acid, or this is phenol basically when the phenol dissociates, so it gives H positive ion. H positive ion shows कि it has acidic nature. Comparison अगर मैं इसका कराऊं obviously water से, I have to do a comparison of phenol with water. So ultimately both are giving H positive ions. Okay, but remember कि we have to see the stability of its anion. We have to see the stability of its anion. What does it mean? It's anion. When any compound dissociates, like in terms of, I'm talking about acids, so they give two ions. First ion is negatively charged and another ion is H positive, that is proton. So if you can see K proton and then proton, they both are the same, but we have to see which acid is weaker and which acid is stronger. So I would be looking at the stability of this anion. Okay, I would be looking at the stability of this anion. If the anion if the anion if the anion is unstable, if the anion is unstable, so obviously it would be combining with this H positive ion. It would be combining with this H positive ion. Okay, just like that. H positive ion. Okay, and then it would be going back to the reactant side. And it would be going back to the reactant side basically. So ultimately I can say that this acid is a weak acid. But if the anion is more stable, as in this case this is phenoxide ion which is more stable. Why this is more stable? Due to the delocalization of electron. Due to the delocalization of electron, it's very simple. Due to the delocalization of electron, right? So obviously when it's more stable, so it would not be reacting with this H positive ion. It would not be reacting with this H positive ion. So ultimately it would remain in this form. Basically. So I can say that phenol is more acidic than water. क्यों? कि इसने H पॉजिटिव दे तो दिया वाटर ने, लेकिन देने के बाद उसका एन आयन ही इतना अनस्टेबल है कि वो एन आयन क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दोबारा इससे रिएक्शन करके इट वेंट बैक. लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है. जब ये स्टेबल है तो ये इससे रिएक्शन करके बैकवर्ड नहीं होगा अल्टीमेटली. तो किसी भी एसिड की एसिडिटी के लिए याद रखिएगा, हम उसके एन आयन को देखेंगे. तो if the anion is more stable, okay, so that acid would be strong acid. And if the anion is less stable, तो वो weak acid होगा. So always examiner would be giving you the comparison between the two acids. Okay, examiner would be giving you the comparison between the two acids. So वो आप कैसे करोगे उसको? You would be looking at the stability of its anion. If the anion is more stable, so your acid would be stronger.
And if your anion is less stable, so your acid would be weaker. So this is the criteria. Okay, this is the criteria basically. And after this, अगर मैं आपको कहूँ कि you have to do a comparison between you have to do a comparison between these three. Like the first one is phenol. Okay, the first one is phenol, and the next one is water, and the next one is ethanol. Okay, and the next one is ethanol basically. So we have to do a comparison between these three, among these three. तो obviously आपको पहले इन्हें डिसोसिएट करवाना होगा, आयोनाइज करवाना होगा, and after the ionization then you would see which anion is more stable and which anion is less stable. On the basis of the stability of anion, I can decide this acid is stronger and this acid is weaker, or this acid is in between the stronger and weaker. So can you tell me कि इन तीनों में से which is stronger and which is weaker? So first of all, आप इसे क्या करो, आप इसे dissociate कराओ. Okay, आप इसे dissociate कराओ, and after the dissociation then you are supposed to think which anion is more stable and which anion is less stable. Okay, try karo, then I'm telling you, right? सर आप मुझे ना अपनी क्लासेस का स्केड्यूल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ये आपके पास आ गया स्केड्यूल, जस्ट अ मिनट। ये आ गया। साहिल जल्दी करो, देन आई एम टेलिंग यू। रामीन, मैं ये बता दूं आपको कि हम ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज फिनॉल और वी आर लुकिंग के फिनॉल का कंपैरिजन करवा रहे हैं, फिनॉल का कंपैरिजन करवा रहे हैं वाटर से, एथेनॉल से, कि इन तीनों में से कौन मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन लेस स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी कि वीकर एसिड है। तो हम हमें कंपैरिजन करवाना है बेसिकली इन तीनों में से। तो मैंने मेथड ये बताया है कि आप क्या करो, इन तीनों को डिसोसिएट करवा दो। ओके, आप इन तीनों को डिसोसिएट करवा दो। डिसोसिएट करवाने के बाद इनके जो एन आयन बनेंगे आपके पास, उन एन आयन की आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। उन एन आयन की आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। जिस एन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी वो वीक एसिड होगा। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, गौर से देखिएगा, मैंने तीनों को डिसोसिएट करवाया हुआ है। इसकी डिसोसिएशन ये है, इसकी डिसोसिएशन ये है, और इसकी डिसोसिएशन ये है। इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने आपको क्या मेथड बताया कि यू हैव टू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, यू हैव टू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो मैं अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करवाता हूं मैं। ओके, सो इट्स मोस्ट स्टेबल, it's most stable. Okay, it's the most stable one. क्यों? If you are asking why, if you are thinking why, if you are thinking why, so this anion has delocalized electrons and it's more stable. This anion has delocalized electrons and it's more stable. Obviously this is stronger acid so far. अब मैं इन दोनों को चेक करता हूँ। ओके, so now you have the two anions. Now we have to look at the stability of these two anions. Now you know that ये वाला जो group है, you know this is called alkyl group. You know this is called alkyl group.
I have told you in benzene when we were doing, okay, what do you mean by the term alkyl group? Okay, what do you mean by the term alkyl group? You know, the nature of the alkyl group is electron डोनेट donating. इलेक्ट्रॉन्स. एग्जैक्टली exactly. हाँ जी, तो डोनेट जब ये करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये तो तबाही मचा देगा. इट वुड बी हैविंग अ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होगी क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. इफ यू कैन चेक दिस, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेसिकली. तो मसला ये है कि जब ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर हैं और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि ऊपर से जब अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट इज कार्बन, तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विच मेक्स दिस एनायन लेस स्टेबल. जब ये लेस स्टेबल हो जाएगा अल्टीमेटली इट वुड रिएक्ट विद दिस एच पॉजिटिव आयन टू फॉर्म ethanol again. It has dissociated its H positive ion, but the reaction is reversible since we know that the reaction is reversible, but it went back. दे तो रहा है लेकिन वापस ले रहा है. सो मतलब कि ये वीक एसिड है. अच्छा, अगर मैं इसको देखूं ना, इस OH माइनस को, देर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड. सो कंपैरेटिवली दिस इज more stable anion. Comparatively, it's a comparison basically. So it's more stable anion. So ultimately, most, more, and less. So obviously, I can decide, I can categorize. Okay, this is stronger acid. Okay, then water. Then water is stronger acid than ethanol. It's very simple. It's straight away criteria. Okay. Now I'm telling you, K, can you tell me कि थोड़ा सा टॉपिक से हटके हैं बट एग्जामिनर जनरली गिव दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि CH3OH versus C2H5OH. Can you tell me like which one is a stronger acid and which one is weaker acid? So first of all, you have to dissociate this. Then you can tell me. Okay? Yes. Fast. सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे सब लोग? Method is very simple. सर Method is फर्स्ट very वाला जो simple. है वो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी दूसरे वाले की निस्बत. हाँ 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 हाँ, क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? सर वो मैंने इसलिए सोचा क्योंकि दूसरे वाले में ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा वो मतलब पूरा एक अल्काइल ज्यादा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इसलिए. तो Exactly, वो ऐसे जल्दी ही से. सोचना है. So obviously, okay, it has more carbon atoms. So it's strong electron. It's it has a strong electron donating effect. It has a strong electron donating effect, right? So ultimately, इसका जो एनायन बनेगा इट वुड बी लेस स्टेबल, लेकिन इसका जो एनायन बनेगा इट वुड बी लीस्ट स्टेबल क्योंकि इट हैज ओनली वन कार्बन एटम. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये भी है बट इतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा ये. साहिल, बात समझना है उसी टाइम टोक देना. ओके, so that's why on the basis of this information I can say that methanol has an anion that is the more stable. So obviously that's why this is strong acid as compared to ethanol, because ethanol has two carbon atoms, so its electron donating group is stronger than the methanol group. So that's why on the basis of this I can say that ethanol is a weaker acid as its anion is the least stable. Sahil, are you getting my point? यस सर. गुड हो गया जी. यस, नेक्स्ट इज दैट के almost phenol is slightly soluble in water, near to insoluble in water. Okay, so generally we add phenol in NaOH, sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide.
So when phenol is going to react with alkali, that is NaOH, so it would be producing, okay, it would be producing salt, that is sodium phenoxide, and water. So it's a general acid base reaction. It's a general acid base reaction. Okay. And also, obviously, phenol is an acid, as we have decided. So ultimately, phenol को तो फिर acid से reaction, phenol को तो फिर metal से reaction करना चाहिए. Like we used to do in IGCSE, के when we have an acid, so obviously it is supposed to react with a metal, also with an alkali. So it is reacting with alkali. It is reacting with alkali basically. So it should react with metal, but remember, it's very important to know, okay, it would be reacting with only reactive metals. Remember, it would be only reacting with reactive metal. Remember, it's very important. Okay. So obviously, sodium is a reactive metal. Okay, sodium is a reactive metal. So that's why this is the reason, okay, phenol can react with sodium, phenol can react with potassium, as they are very reactive metals. But remember, it would not be reacting with copper, it would not be reacting with silver, it would not be reacting with aluminum, it would not be reacting with anything else that is the less reactive. Okay, because phenol already एक weak acid है ना यार, तो इसको स्टार्टअप के लिए stronger activation energy is required. तो अगर आप इसको रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं कराओगे तो इट वुड नॉट बी रिएक्टिंग विद सम लाइक समथिंग एल्स. ओके, तो इसलिए such as sodium, it's very special reaction क्योंकि sodium is reactive. Okay, examiner would be asking the type of reaction. Like frequently he would be asking when you are going to do some past papers. So you will see over there, okay, he's asking again and again type of reaction. Sometimes we write substitution, sometimes we write electrophilic addition, sometimes we write electrophilic substitution, sometimes we write it's a photochemical reaction, sometimes we write it's a redox reaction. Sodium is 0, and over here the sodium is +1. So obviously, since it is converting from 0 to +1, which shows that this is a redox reaction. It's very simple. It's very simple. But normal alcohol do not react with NaOH. क्योंकि normal alcohol तो बिल्कुल ही वीक एसिड्स होते हैं. बात को और से सुनिएगा जरा. आप समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल ही वीक एसिड्स होते हैं ना यार. तो जब ये NaOH से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो जो कार्बोनेट से क्या खाक करेंगे रिएक्शन? कार्बोनेट तो और भी वीक की तरफ चला जाता है. तो ये एज अ कंपैरिजन है. सो इट वुड बी हैविंग अ लाइक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कि आपको कम से कम आपका ग्राउंड सेट हो जाए कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है. और ऑब्वियसली जो जितने रिएक्शन कर रहा होगा वो उतना रिएक्टिव होता है, और जो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है. इसलिए ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन द नॉर्मल अल्कोहल. इट्स अ क्लियर आइडिया. ओके. देन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव. क्यों? कि फिनॉल पर OH ग्रुप अटैच हुआ है. ऑन द फिनॉल OH group is attached. Obviously, OH group is electron donating group. Now it's a general confusion. Okay, so how do I come to know whether the group is electron donating or electron withdrawing? So it is observed that if your group is having double bond, listen, this is very important. If your group that is attached on the benzene ring is containing double bond, would be electron withdrawing group. This is a general observation. Okay, and it's correct 99%. It's a general observation. Okay, those groups which are attached on the benzene ring, if they have a double bond,
Okay, if they have a double bond, so they are electron withdrawing group. But if they are not containing double bond, so they would be electron donating group. Obviously, OH is not having any double bond, so that's why it's electron donating group. And electron donating group would be donating its electron to the benzene ring. So as a result of this, the benzene ring becomes more reactive. As a result, the benzene ring becomes more reactive. When the benzene ring becomes more reactive, when the benzene ring becomes more reactive, so ultimately no need to provide heat, no need to add a catalyst. Okay, no need to add a catalyst. Already the ring is more reactive. Already the ring is more reactive. This is the reason we are only adding dilute nitric acid and it would be giving you the product. Okay, जब हम नाइट्रेशन कर रहे थे ना, बेंजीन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस वक्त हमने इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज की थी। मतलब के कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं, उसको हीट भी कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं, तब जाके उसने नाइट्रेशन की थी। बात समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइल्ड कंडीशंस पे भी रिएक्शन हो रहा है। वाह यार, क्या बात है! इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है मेरे भाई कि ये ऑलरेडी रिएक्टिव रिंग है। और इसको रिएक्टिव बनाने वाला कौन है? OH, OH, OH। ओके, तो इस OH की वजह से द रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव। सो अल्टीमेटली नाउ द माइल्डर कंडीशंस आर required to start up the reaction। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि वो नॉर्मल कंडीशंस पर भी क्या हो रहा है, बड़ी आराम से वो रिएक्ट कर रहा है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो। तो इसलिए आई हैव ओनली एडेड dilute nitric acid, no need of catalyst, no need of providing heat, so it's going to give you the product. But now again the important thing is that why NO2 is attached over here. Okay, तो आपको पता है कि OH is electron donating group and all electron donating groups are 2, 4, 6 directors। बहुत डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ इसकी पिछली क्लासेस में कि why they are 2, 4, 6 directors, why they direct the coming group to attach to the three positions 2, 4 and 6, 2, 4 and 6। तो इसलिए ये जो NO2 आपके पास आकर अटैच हुआ है, ये कहाँ लगा है? जाकर 2 पोजीशन पर भी लगा है, 4 पे भी लगा है। ओके, 2 पे भी लगा है, 4 पे भी लगा है। समटाइम ऐसा भी होगा, आप लोग देख रहे होंगे मार्किंग स्कीम में ये प्रोडक्ट लिखी हुई है। तीनों पोजीशंस पर NO2 अटैच कर दिया, तीनों पोजीशंस पर NO2 अटैच कर दिया। ओके, कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या होगा? यस, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस, साहिल, रामीन क्या कहती है बेटा? 2,4,6 नाइट्रोफिनोल। साहिल क्या कहते हो? Yes, sir, same. It's 2, 4, 6, it's 2, 4, 6 Try. trinitrophenol, trinitrophenol, it's 2, 4, 6 trinitrophenol। ओके, अच्छा, तीनों पोजीशन पर NO2 लग गया। अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ हो, बाकी कुछ भी ना डाला हो, तो तब आप बनाओगे जिसमें NO2 कहाँ जाकर लग जाए? तीनों पोजीशंस पर। लेकिन अगर उसने सिर्फ डाइल्यूट लिखा है तो यू आर सपोज टू अटैच NO2 वंस। यू मे अटैच ऑन सेकंड पोजीशन, you may attach on the fourth position, you may attach on the sixth position। Okay, so it's up to you। And then पर मुझे इसकी ब्रोमिनेशन समझ ऑफ, नहीं आई। यानी मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको, आपने सिर्फ अभी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया है, और आपको पता है कि ये जो OH ग्रुप है वो आने वाले को या तो 2 पर भेजेगा या 4 पर भेजेगा या 6 पर भेजेगा। नंबरिंग होती है ना बेंजीन रिंग की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 2 पर भी लग सकता है, 4 पर भी लग सकता है और 6 पर भी, इसके अलावा कहीं नहीं लग सकता, क्योंकि OH की नेचर है। मैंने एक मिसाल दी थी, मैंने कहा था कि आपकी क्लास में एक बदमाश लड़का है। ओके,
और जब आप सुबह सुबह क्लास में जाते हो तो उसकी मर्जी से बैठते हो आप। अगर कोई भी ना हो क्लास में तो इट्स अप टू यू कि आपकी मर्जी है, जहां दिल करो वहां बैठो। लेकिन अगर पहले से कोई बंदा बैठा हुआ है क्लास में, बदमाश है, तो वो उसकी मर्जी चलेगी। तो ये ओएच बदमाश है। ये आने वाले को स्पेसिफिक जगहों पर भेजता है। वो कहता है या तो 2 पर जाके बैठो, या तो 4 पे जाके बैठो, या फिर 6 पे जाके बैठो। ये नहीं कि कोई भी यार कहीं भी अटैच हो जाए, नहीं। अब तो ओएच की मर्जी चलेगी। ओएच इज डॉन। ओएच इज डॉन। तो इसलिए मैंने कहाँ कहाँ अटैच किया, या तो 2 पर या 4 पर। लेकिन आप ना, मैंने क्या कहा आपको कि आप ना मार्किंग स्कीम में कभी कभार बेटा ये वाला प्रोडक्ट भी देखोगे यार, कि पता है उसने क्या किया हुआ है, तीनों पोजीशन पे एट अ टाइम उसने NO2 अटैच किया हुआ है। तो जब आपको ये वाली प्रोडक्ट बनानी हो ना, तो फिर आप बजाय इसके कि यहाँ डाइल्यूट लिखो बेटा, यहाँ आप कॉन्सेंट्रेटेड लिख दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है रामीन, ये सुनो। यस, समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये है सिनारियो। अच्छा, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये हर एक के साथ है बेटा। हर एक के साथ है ये, यानी ये ब्रोमीन के साथ भी है, ये क्लोरीन के साथ भी है। सो यू हैव टू लुक एट द कंडीशन, दैट व्हाट द कंडीशन एग्जामिनर हैज गिवन यू, तो वो उस पर डिपेंड करेगा बेटा। ओके। अच्छा, अगली बात ये कि फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवानी है। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज ब्रोमिनेशन। तो ultimately again I would say that this is electron donating group. It would be directing the coming group to attach to these positions. Okay, to these positions. यहाँ पर भी no catalyst is required ultimately. Already this phenol is more reactive. No catalyst is needed. No temperature is needed. Okay. So it is 2,4,6 tribromophenol. Okay, 2,4,6 tribromophenol, and this is white PPT. Examiner would be asking to write down an observation, so you would write white PPT is produced, then chlorination of phenol, then phenol is going to react with chlorine at room temperature. No catalyst is required, so it would be giving you 2,4,6 trichlorophenol with the release of 3 molecules of HCl. Okay, then preparation of phenol. Then preparation of phenol. How can you prepare phenol? Basically, it's from the you can say que first of all you are supposed to take this, okay, okay, and then you are supposed to react it with nitrous acid, nitrous acid, okay. They would be reacting together. They would be giving you this product. Mechanism is not required. Okay, how this is happening, okay, and then this product would be formed. This is called diazonium salt. You can also write this product as this. This is called diazonium salt. When the diazonium salt is reacted with water, so it gave you phenol. It gave you phenol. So in this way you can prepare, in this way you can prepare phenol. In this way you can prepare phenol. Okay, first of all you did the reaction that is in between this and nitrous acid in the presence of this NaNO2 plus HCl, and temperature is less than 10 degrees Celsius. So you had diazonium salt, and then when you have reacted this diazonium salt with water, so you got the phenol. This is the preparation of phenol. Okay, this is the preparation of phenol. So that's it for the phenol. That's all about the phenol. And then doing some papers related to phenol and benzene, and then we would be moving on to organic nitrogen compound. Okay, it's very easy. You must know the reactions. But before going into the detail of phenol, almost I told you in the last class as well कि सबसे पहले तो आप बेंजीन के रिएक्शन देखो. Before doing phenol, you must do benzene, arenes. तो उसमें कई सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे. अक्सर वो ज्योमेट्री पूछ रहा होता है बेंजीन की, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा होता है बेंजीन का, बॉन्ड एंगल वगैरह पूछ रहा होता है बेंजीन का. तो you have to do a comparison, okay. Then he would be asking कि क्लोरीनेशन में क्या है, ब्रोमिनेशन में क्या है, सारी चीजें हैं, फिर फिनॉल है, लेस एसिड है, लेंदी
वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है, कैसा है, रिएक्शंस क्या हैं। जब हम नॉर्मल नाइट्रेशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आर नीडेड, बट व्हेन वी डू द नाइट्रेशन फॉर फिनॉल तो माइल्ड कंडीशन पर क्यों हो जाता है, क्या वजह है इसकी। ऑब्वियसली वी नो दैट के फिनॉल इज मोर लाइक यू कैन से कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि फिनॉल के ऊपर एक ओ लगा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जब फिनॉल को अपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है तो फिनॉल यानी कि रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव, रिंग बिकम्स मोर नेगेटिव। रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इन द इनसाइड द बेंजीन रिंग, अब ऑक्सीजन ने भी जब अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, डीलोकलाइज हो गया, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, जल्दी जल्दी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, तो इट वुड शो अ फास्ट रिएक्शन, इट वुड शो अ फास्ट रिएक्शन। So this was the phenol. So inshallah we would be starting organic nitrogen compound. तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके नहीं हो तो फिर लेट्स सी इंशाल्लाह।